Hello everyone, myself Varun Agarwal, I'm the Agile consultant and we are at the session 2 for the Agile Transformation. So in our first session few days back, we saw the approach LLE which talked about the loose, learn, educate, and today we are starting with the first L, that is loose. So this is to discuss what we are losing without Agile or why Agile is required in today's time. So I'll take around 3 to 4 sessions to discuss this loose part. Yes, let's start with the first one, the loose. So we need to understand what we are losing or why Agile is required. So to understand this, why Agile is required today, I think we need to understand our society first. That means हमारी सोसाइटी इवॉल्व कैसे हुई है, हमारे ह्यूमंस या एज ए ह्यूमन हम इवॉल्व कैसे हुए हैं, क्या क्या था इन द एशियन टाइम्स क्या था. सो आई थिंक अगर हम वो चीज़ समझेंगे दैट विल बी वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड कि अब एजाइल की जरूरत क्यों पड़ रही है. तो टू अंडरस्टैंड दिस आई थिंक वी शुड नीड आवर टाइमलाइन. सो ये एक टाइमलाइन है जिसमें दिस इज द एशियन टाइम एंड हियर वी आर टुडे. सो अगर हम बहुत बहुत पहले की बात करते हैं, सो अराउंड बिलियन ईयर्स अगो आवर अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो कुछ बिलियन ईयर्स पहले एक टाइम था जब हमारी अर्थ फॉर्म हुई थी ड्यू टू सर्टेन एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशंस और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स. सो देयर वाज समथिंग हैपेंड एंड अर्थ फॉर्म. देन आज से कुछ हजार साल पहले ह्यूमन केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो तब से अब तक कुछ हुआ होगा ऑन द अर्थ, बट दैट वाज द टाइम few thousand years ago human came into existence. Now when the first human came, so they were like ape and they evolved. When the very first human looking entity evolved, so that was called the Homo erectus, जिनके शरीर बहुत बड़े थे and the brains were very small, so they were doing the physical activities more rather than the knowledge activities. So धीरे धीरे जैसे जैसे उनका brain develop हुआ, then we move forward and the Homo sapiens came into existence, जिनका दिमाग फिर बड़ा होने लगा, the body became smaller. So this was the evolution. But अगर हम यहाँ देखें जो 1000 years पहले जब ये human आए थे, ह्यूमन एग्जिस्ट करने लगे थे, then what was the purpose of their life? They were just having the single objective of satisfying their hunger. So what they did, they were hunting the wild animals. उनको बस शिकार करना था so that they can get the meat and they can eat and they can satisfy their hunger. So nothing except that. एक स्थान पे एक जगह पे जब वो हंटिंग करते थे, दैन वहाँ से जब वाइल्ड एनिमल्स कम होने शुरू हो जाते थे, दैन दे गो टू द अदर प्लेसेस जहाँ पे उन्हें और एनिमल्स मिल सकें एंड दे कैन डू द हंटिंग. सो ये यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे दैट वाज नथिंग बट जस्ट द हंटिंग एंड रोमिंग अराउंड द प्लेसेस दैट वाज हैपनिंग हियर. देन धीरे धीरे उनका दिमाग डेवलप होना शुरू हुआ. अभी तक वो क्या करते थे कि रॉ मीट खाते थे, बट दे इन्वेंटेड फायर. सो आफ्टर दैट उसके बाद they started roasting the meat, they started roasting the food, and gradually they developed, they invented a few things, they evolved actually. Then कुछ और हजार साल बाद they started feeling that they should have the settlement. उनके पास ना अभी तक क्या कर रहे थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूम रहे थे खाने के लिए, बट दे स्टार्टेड फीलिंग द नीड ऑफ द सेटलमेंट, जहाँ पे वो सेटल हो सके, रह सके एंड दे कैन लिव देयर लाइफ. तो अब धीरे धीरे उन्होंने फल फूड ये सब चीज़ें भी ढूंढी, ये सब चीज़ें भी उन्होंने खानी शुरू करी. सो दे लेट्स से अ फ्यू मोर थाउजेंड ईयर्स आफ्टर दे स्टार्टेड फीलिंग द नीड ऑफ द सेटलमेंट. अब ये वो जगह थी जहाँ पे उन्होंने फार्मिंग करनी शुरू करी, एग्रीकल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो उनके पास ज़मीन थी, उन्होंने दे स्टार्टेड फार्मिंग एंड दे स्टार्टेड लिविंग with their agricultural land and they started doing the things. Somewhere in around 1300 to 1400 AD, it was the time when the first agriculture revolution took place. So यहाँ पे
we can understand how this became important for the human, the agriculture. Anyway, ये सब चीज़ें और चलती रही, they evolved more. Now अभी तक mainly they were doing the things with the hands manually, but they started feeling the need of the tools, the products which can help them in their daily routine. So then it was the time, again few thousand years after, there was the time when the need of industry arises. So we saw that in around 1780, 90 AD, we saw the industrial revolution, and we needed the industries at this point. तो यहाँ पे वो और इवॉल्व हुए, इंडस्ट्रीज लगी, एंड देन they started doing the development for the products, the tools. Then let's move to today's time. Where are we at today? So we are here today, and what we are seeing, this is the very rapid, very fast time in which we are living. Everything is very fast. Everything, the communication is becoming very faster. Any information, anything can move from one place to another place in seconds. So what we are seeing, it is the very rapid and the fast, rapid environment in which we are living. So this is the time of the information. We are living in the information age. And because of this rapidness, because of this faster environment, there are much competition around the industries, not only the software industry, but health industry, automotive industry. So there is a lot of competition, and everybody wants to deliver something new, something innovative to the customers. So the things are changing very rapidly. If we are starting we started working on something today, then after some time we find that there should be a different need, there can be a different need, or there can be a different valuable increments for the stakeholders, which can give the competitive advantage to our stakeholders, to our customers. So yes, everything is becoming very rapid. And one more thing we are seeing in today's time, जब यहाँ पे थे, then humans were simple. They were just focusing on what they need to do. In today's time, they are also focusing on their mental health, their emotions, their feelings. So they are very aware about their social justice. So एक और चीज यहाँ पे है, चीजें तो फास्ट हो रही है, दूसरा we need to understand about the feelings, about the emotions. So what is happening here, अगर हम यहाँ से यहाँ पे कंपेयर करें तो चीज़ें ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई हैं. सब कुछ जल्दी भी चाहिए, लोग भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं. एंड अब इन सब चीज़ों को एक साथ रखें, एंड जब हम फिर ये देखें कि हमें कुछ काम करना है, तो वो एक एनवायरनमेंट जिसमें वी हैव टू वर्क, वी हैव टू डिलीवर द थिंग्स becomes more complex. And then industry wise it also becomes more complex. So there is let's say this is a hardware industry जहाँ पे we need to do some manual work, like मैं चेयर बना रहा हूँ, मैं मेज बना रहा हूँ, एक वो इंडस्ट्री है. दूसरी इंडस्ट्री है जहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर्स बना रहा हूँ, आई एम डूइंग सम टीचिंग वर्क, आई एम डूइंग सम कंसल्टिंग वर्क. तो एक वो इंडस्ट्री है जहाँ पे वी से द नॉलेज वर्क वी आर डूइंग. तो जब our brain got involved, and we are also emotionally driven and the feelings driven people, then it becomes more complex to deliver at the workplace. तो अब जब चीज़ें इतनी सारी कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, हर चीज़ कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, अनसर्टेन होती जा रही है, then this is the time that we need something different, जो कि यहाँ पे काम कर रहा था may not be working here. तो ठीक है, अगर हम पिछले कुछ सालों से वाटरफॉल यूज़ कर रहे थे, हमें पता था कि हमारी रिक्वायरमेंट्स वेरी क्लियर कट हैं, हमें क्या डिलीवर करना है, एंड वी कैन जस्ट स्टार्ट थिंकिंग लाइक ओके दिस इज द रिक्वायरमेंट, ये चीज़ हम डिलीवर कर देंगे. बट टुडे इट माइट नॉट हैपन, बिकॉज जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं उसके बाद चीज़ें कैसे बदल जाती हैं, वी डोंट नो. इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं. देयर वाज अ टाइम in 2016, so let's say we are in, there is a date, let's say 1 Jan 2016, and what is happening here,
मैं कस्टमर हूँ, मुझे अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, मेरा कुछ काम है, मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, एंड देन देयर इज अ वेंडर जिससे मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए। अब सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई कि हाँ भाई मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या बनना है, यूज़र प्रोफाइल्स रहेंगे, कार्ड्स रहेंगी, एंड पेमेंट गेटवेज रहेंगे, एवरीथिंग विच वी सॉ which we have seen in the e-commerce website. So वो सारे features, वो सारे modules I need in my website. And after analyzing all the requirements, my vendor said that I will deliver this in let's say 1 साल का time चाहिए. In December 16 I'll deliver everything. So in December 16 I'll get this. Now अब चीज़ें होनी शुरू हो गई। अब क्योंकि मैं इंडियन मार्केट को टारगेट कर रहा हूँ, तो इंडियन मार्केट में थोड़ा सा, क्योंकि मैं पीछे हूँ, 2016 की बात कर रहा हूँ, एक मेंटेलिटी है कि भाई मैं ना कैश ऑन डिलीवरी रखूँगा अपने इसके लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, क्योंकि थोड़ा सा इंडियन मार्केट में कैश ऑन डिलीवरी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हो रही है। ठीक है, सब चीज़ें चल रही थी, मैं धीरे धीरे मेरे पास स्टेटस रिपोर्ट आ रही है, मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ, सो आई एम श्योर कि मुझे दिसंबर 16 तक ये मिल जाएगा। बट व्हाट हैपन्स, जब मैं नवंबर में पहुँचता हूँ, I came in November 16. So at one fine day at 8 p.m. Prime Ministers comes to the television and said that वो 500 के और 1000 रुपए का नोट नहीं चलेगा। There was a demonetization and ये जो समस्या है ये करीब 50 दिन में, लगभग 2 महीने में ये सॉल्व हो जाएगी नोट्स की। रिजर्व बैंक नए नोट्स प्रिंट करेगा एंड देयर विल बी अ न्यू नोट्स ऑफ 500 and 2000 विल बी इन द मार्केट इन द 2 months। अब और ये सेम डे ये सारे नोट्स बंद हो जाएंगे, मतलब 4 घंटे के बाद नेक्स्ट डे से ये सारे नोट्स बंद हैं। अब है क्या कि मैंने तो कोई फाइनल किया था कि मैं कैश ऑन डिलीवरी पे जाऊंगा, दिसंबर में मुझे अपनी वेबसाइट रिलीज भी करनी थी, लेकिन मैंने ये देखा कि जब ये हुआ, जिस दिन ये हुआ उसके 2-3 दिन बाद काफ़ी नोट्स की ना प्रॉब्लम होने लग गई मार्केट में। तो ऑनलाइन पेमेंट का एक सिस्टम था जो कि बहुत तेज़ी से फिर बढ़ने लगा, बट हार्ड नोट्स वर वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। एटीएम्स पे नहीं मिल रहे थे, वो बैंक्स पे भी काफ़ी लंबी लाइनें लग रही थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिनेरियो कि दिस वॉज समथिंग अनसीन टू माई प्रोडक्ट। एंड नाउ क्योंकि मैं तो खाली उसको ही टारगेट कर रहा था, अब मुझे पूरा मैकेनिज्म तैयार करना है ऑनलाइन पेमेंट का, जो कि मैं पहले नहीं सोच के चल रहा था। मुझे लग रहा था मैं फेस 2 में ऑनलाइन एक बार वो देख के कि हाँ कैसा रेस्पॉन्स है, देन आई विल टेक दिस। बट नाउ आई नीड दैट ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी in my website. Now I'll be talking about vendor and there will be a different timelines to this. So this was a scenario कि कैसे चीज़ें बदल जाती हैं। We are living in a world where socio-political and economical conditions are changing very rapidly. पॉलिटिक्स में एक जगह कहीं कुछ होता है, अभी रशिया एंड यूक्रेन में कुछ हो रहा है, उसकी वजह से हर जगह पूरे वर्ल्ड में एवरीथिंग इज इम्पैक्टेड। तो चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी फॉर्म में वी आर एक्सपीरियंसिंग, बट वी आर सीइंग द इम्पैक्ट। सो टुडे एट द ग्लोबल लेवल वी आर कनेक्टेड, वी आर नॉट डिस्टेंट, वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सो अगर कहीं पे कुछ होगा तो वो यहाँ पे भी इम्पैक्ट करेगा, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी रैपिड। And that's why, because these kind of things comes into these kind of things can occur, so we need some way of working where we can target these uncertainties, and that is why Agile came into the picture, because there are few things in Agile which can tackle in Agile job work, which can tackle these kind of uncertainties, ambiguities. So that is something why the Agile is required. We shall be discussing more on this in our next session, but before moving forward, we need to understand how our society evolved, and that's why I added the one session on this, so that we can understand how we evolved and why the need of some different way of work is arising today. So guys, I'll meet you in the session 3. This was the session 2. Any questions, any expert session, any help if you need, just send me a mail on mail to agarwalvarun@gmail.com. So we'll see you in the session 3.